Welcome back friends, this is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Subscribe our channel for more updates. So today, as per the request of our user, we have brought a very big lecture for you, that is profit and loss. Most of the students have feel a lot of doubt in this lecture. That's why we have make this video. Okay, so friends, this video will be approx 6 parts. Okay, 5 to 6 parts. It will be 5 to 6 parts. And friends, this video will in the form of bilingual in nature. Bilingual, that means I will explain this video in English as well as Hindi, because most of the users are from South India and they can't understand the Hindi, and few can't understand the English. That's why we are making this video in both the formats, Hindi as well as English. तो आज हम आपके लिए लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1, और इस वीडियो को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिकोड करूंगा. एंड फ्रेंड्स, द क्वेश्चंस दैट वी विल कवर here for railway exams, bank PO as well as SSC exams. Okay, and if you are preparing for any state exams, then you can watch these videos, because profit and loss is a very common topic in every competitive exams. प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक होता है वो बहुत कॉमन होता है, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. एंड फ्रेंड्स, इन द पार्ट 1 वी विल डिस्कस ओनली इंट्रोडक्शन. We will do some basic calculations, so this is really a very crucial and important part. इस पार्ट में हम केवल इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ कैलकुलेशंस कैसे करनी है उनको डिस्कस करेंगे. ओके, तो आप इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा. राइट नाउ फ्रेंड्स, अबाउट अस, बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू. स्प्रेड द वर्ड अमंग योर फ्रेंड्स एंड share for those people who cannot afford the coaching classes, and you know learning is priceless, so please do at least. And friends, if you want any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel, that is here, facebook.com/currentaffairsfunda CAF. this is our Facebook channel. आप अपनी कोई भी क्यूरी हमारे Facebook चैनल पर भी भेज सकते हैं, और आप इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. लेकिन आप वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट गेट द कोचिंग क्लासेस. ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फ्यू कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस. कुछ कॉन्सेप्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं. पहले ही कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगी. फ्यू कॉमन टर्म्स आर देयर. फर्स्ट वन इज द कॉस्ट प्राइस. What is the mean of cost price? Cost price is a price at which goods are or have been bought by a merchant or retailer. That is called the cost price. Cost price में क्या होता है, जब भी आप दुकानदार के पास कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप जिस रेट पर उससे खरीद रहे हैं वो आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CP. That is also known as CP. Okay. And what is selling price? Selling price is the amount you actually pay for the thing when you purchase. Okay, selling price एक ऐसा अमाउंट होता है जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं और आप जो उसके लिए पे कर रहे हैं. ठीक है, तो जो बंदा रिसीव कर रहा है ये वो क्या कहेगा, ये उसने सेल कर दी इतने में. ठीक है, जैसे कोई बंदा एक एक्स है, वो किसी रिटेलर के पास गया और वहाँ से उसने 100 रुपये की 100 रुपये की एक कोई आर्टिकल खरीद लिया, तो ये क्या हुआ उस बंदे के लिए, ये हुआ CP. उसने कॉस्ट प्राइस में वो आर्टिकल खरीदा. अब उसने उसी आर्टिकल को आके किसी बंदे को 200 रुपये में बेच दिया. दैट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस. ओके, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो आप एक्चुअली पे करते हैं किसी के लिए, कोई भी परचेज के लिए. ओके, एंड व्हाट इज मार्क्ड प्राइस? सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो नोन एज SP. वी विल यूज दिस टर्म ऑल्सो देयर. ओके, हम SP CP को यूज करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको पहले बता रहा हूँ. मार्क्ड प्राइस इज अ जनरल प्राइस ऑफ अ थिंग विदाउट एनी डिस्काउंट. ओके, मार्क्ड प्राइस क्या होता है, जैसे कोई भी एक जनरल प्राइस है, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मार्क्ड प्राइस. सपोज अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल्स आई विल गिव यू इन अपकमिंग slides. Okay, and what is the mean of discount here?
marked price is known as a MP. We can say that is marked price. Okay, and what is the mean of discount? Discount is a percentage of the marked price. Marked price पर जो भी चीज डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्काउंट प्राइस. ओके, डिस्काउंट इज अ परसेंटेज ऑफ द मार्क्ड प्राइस. हर बार कोई ना कोई जब आप डिस्काउंट देते हैं तो वो आप कहां पर देते हैं? मार्क्ड प्राइस पर ही देते हैं. फाइन. सो राइट नाउ वी विल डिस्कस सम बेसिक कैलकुलेशंस हियर and it will really help you a lot. So first of all friends, let me write some calculations for you. This is your cost price CP, this is your marked price MP, and that is your CP SP selling price. Okay, so these are the basic three entities that you should understand. Okay friends, suppose CP of article that is 80 rupees and marked price that is 130 rupees. Okay, and selling price assume that is 1110. Okay, so here we will discuss all the four things also there. What is mean of markup? See, if that is cost price here and that is marked price here, okay, you have increased the amount of cost price, then it becomes the marked price. That means few markup price is added to the CP and it becomes the marked price. Okay, so markup price, it will be 130 minus 80, it will be 30 rupees. Sorry, it will be 50 rupees. Let me erase it for you. It will be 50. Fine. So we can say markup that is equals to marked price minus CP. It will be equals to the markup. And what is the mean of discount? How you will get the discount here? Discount, it will be marked price minus selling price. It will be discount because discount always given on marked price. डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पर ही दिया जाता है, और जब आप मार्क्ड प्राइस पे कोई डिस्काउंट देके कोई चीज सेल करते हैं तो वो क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस. फाइन. एंड फ्रेंड्स, व्हेन प्रॉफिट बिकम्स, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रॉफिट? Profit is a very simple. When selling price is more than the cost price. Okay, so in this case, when selling price is more than the cost price, then there will be a profit. Okay, so here what is the profit? It will be 1110 minus 80. It will be 30 rupees. That is the profit here. Okay, and what is the mean of loss? Loss किस केस में हो सकता है? Loss only happened in a case when selling price is lesser than the cost price. Okay, when selling price is lesser than the cost price, then you will get the loss here. Assume you have bought a article in 100 rupees and you sell this article in 80 rupees. You sold this article in 80 rupees. So we can say CP, that was the 100 rupees, SP, that was the 80 rupees. So what is the loss here? Loss, it will be equal to 20 rupees. Fine. So this is the basic calculation that everyone need to understand this one. देखिए, अगर आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो आप उस पर कुछ रुपए एक्स्ट्रा लगाने के बाद में, मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा उस पर चार्ज लगा दिया तो आपने उसको मार्क्ड प्राइस कर दिया. अब मार्क्ड प्राइस पे आप डिस्काउंट दें या ना दें, ये आपकी मर्जी है. तो मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस होता है. आप हो सकता है अगर मार्क्ड प्राइस पे ही चीज़ों को बेच देंगे तो वो भी आपका कभी कभी मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस बन जाता है. लेकिन मार्क्ड प्राइस पे जब लोग डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे. आप कोई चीज़ 80 रुपए की खरीद के लाए, अगर आप उस पर डिस्काउंट दे देंगे तो आपको लॉस हो जाएगा. ओके,
तो मार्कअप क्या होता है, जब आप सीपी में कुछ मार्कअप ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मार्क्ड प्राइस। फाइन। तो मार्क्ड प्राइस, मार्कअप प्राइस निकालने का तरीका क्या है, एमपी मार्क्ड प्राइस में से सीपी घटा दो तो ये आपका मार्कअप आ जाएगा। डिस्काउंट कैसे निकालोगे, जब आपने एमपी ये दिया हुआ है मार्क्ड प्राइस इसमें और एसपी ये दिया हुआ है, इसमें से जब आप इसको घटा दोगे तो आपको पता लगेगा कितने रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है। ओके। और प्रॉफिट, जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो सीपी से, कॉस्ट प्राइस से, तो आपका प्रॉफिट होगा। अब लॉस कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस कम होगा सीपी से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, फाइन। राइट नाउ फ्यू थिंग्स यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, दीज आर द बेसिकली बेसिक फंडामेंटल्स, ये बिल्कुल बेसिक है जो आप सबको पता होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स काइंडली नोट डाउन दीज थिंग्स हेयर। ओके, फर्स्ट थिंग, what is the mean of 10% profit? Okay, 10% profit, we will denote profit in upside arrow and less or loss in this side arrow, or discount also in this side arrow. Okay, so profit only this one and loss or discount it will be downfall in some values. Okay, so 10% profit, 10% profit, that means 100 was the base price, so plus 10 it will be 110, so 110 divided by 100 it will be 1.1. so at the place of 10% we will read out 1.1 or 110 divided by 100. अगर 10% लिखा हुआ है प्रॉफिट तो उसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, 1.1 या फिर 110 डिवाइडेड बाई 100. ओके, इन द सेम वे एज्यूम दैट इज 20% प्रॉफिट हियर, सो इट विल बी 120 डिवाइडेड बाई 100 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1.2. फाइन. एज्यूम दैट इज रिटन लाइक 5% प्रॉफिट, 5% profit or 5% gain, then it will be 105 because 100 is the base at 5 here, so it will becomes 105 divided by 100 because that is percentage here, so it will be 1.05 unit. So we will use in the place of 5% as a 1.05. Fine. If friends that is given as a discount or loss like 10% loss या 10 or 10% discount, so we can say 10% discount, that means 90% divided by 100%, it will be 0.9. Fine. If written like 20% discount or 20% loss, so it will be 80% because 100 minus 20, what, 100 is the base price here, 100 minus 20 it will be 80, so 80 divided by 100 it will be 0.8. I hope you all are understand this basic calculations that we gonna use in our upcoming videos. Fine. So friends, there are certain things also that you should understand. First thing here, if CP is given, then there should be a profit or loss, and you can find out the selling price from here. Fine. If CP is given or profit is given or loss is given, then you can find the SP, and in the same way we can also say if SP is given or profit or loss is given, then we can find the CP here. Fine. So how we will do, let me complete for you. If CP is given and you need to find out the SP, then you will go to the forward calculation. You don't need to remember any formula in profit and loss questions. We will do all the calculations on the basis of only concept and logic wise. हमें कोई भी फॉर्मूला पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हम केवल कॉन्सेप्ट और लॉजिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके. If CP is given to you and you need to find out the selling price, then it will becomes the calculation that is forward based calculations. Okay.
If friends SP is given and you need to find out the CP, then you will come in this way, that is called the backward calculations. Okay, just write down the same diagram here. Okay, in the same way we can also say, if marked price is given, then you can find out the selling price, but discount will be there, discount percent will be there. Fine. If you are going MP to SP, that is called the forward calculation, and if you are coming from SP to MP, it will be as a backward calculation. Fine. In the same way, अगर आपको मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है तो आप यहाँ से सेलिंग प्राइस फॉरवर्ड कैलकुलेशन से निकाल लेंगे. अगर आपका एसपी दिया हुआ है और आपका मार्क्ड पूछा है तो आपको फॉर बैकवर्ड कैलकुलेशन करने की जरूरत है. थर्ड थिंग इज हियर, if CP is given to you, then you can find out the selling price. We have already done. If CP is given, then you can find out the mark price here. Okay, so there will be a markup price. If cost price is given and markup is given, so you can find out the mark price. If mark price is given, then you can find out the cost price here. Fine. So these are the basic fundamental that everyone need to understand. So friends, here we will discuss what is the mean of forward calculation and what is the mean of backward calculation. So first of all, I will explain you forward calculation. This is very basic. If you are missing this thing, then you will face a lot of difficulty to understand the upcoming videos. That's why I'm telling you very frank, this introduction part is very important for you. Okay, so what is the mean of forward calculation? Fine. Assume the cost price is given to you. Okay, that is 100 rupees, and you need to find out the selling price here. Fine, you need to find out the selling price here, but you are also have the value of profit here, that is called the 20%. Fine. So if CP is given and you need to find out the value of SP, then you will move to the forward calculation because CP is given to you. So what is the value of selling price SP? It will be CP 100 rupees into, you will multiply in the forward calculation. Kindly note down here, you will use multiply in the forward calculation. So SP it will equal to cost price 100 into, what is the mean of, if profit is 20%, so we can say 1.2. Why? Because 120 divided by 100, it will be 1.2 only. So multiply with 1.2. So you will get obviously here 120. It will be your selling price. तो देखिए, अगर आपको फॉरवर्ड कैलकुलेशन कैसे करनी है, फॉरवर्ड में बेसिकली हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है. अगर हमें 100 रुपए कॉस्ट प्राइस दिया है तो हमें एसपी निकालना है और प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 20%. एज्यूम मैंने कर लिया एक कोई वैल्यू मानकर. ओके, तो इस 100 रुपीज पर अगर मुझे एसपी निकालना है तो देखिए मैंने क्या किया, एसपी यहां लिखा. अब ये कॉस्ट प्राइस हुआ, मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड कैलकुलेशन कैसे होगी, ऐसे फॉरवर्ड जाएगी. ये वाला एरो फॉरवर्ड जा रहा है ना, ठीक है. तो ये फॉरवर्ड कैलकुलेशन में आपको पहली वैल्यू दी हुई होगी और आप दूसरी वैल्यू निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड कैलकुलेशन. सो इन द फॉरवर्ड कैलकुलेशन यू विल मल्टीप्लाई 100 into profit, then you will get the selling price here. Fine. In the same way, if you need to calculate the value of backward calculation, backward that means पीछे आना. फॉरवर्ड का मतलब आगे जाना, बैकवर्ड का मतलब पीछे आना.
if assume that is your CP here and that is your SP here, ये आपका CP है, ये SP है. SP assume करिए आपका दिया हुआ है 100 rupees. Fine. And you need to find out the value of CP here. So what you will use? You will use the backward approach here. So in the backward calculation you will use divide technique. Fine. And there is a profit or loss, so we can say loss is equals to 25%. Fine. So what is the CP equal to? So CP, it will be equal to, what is the selling price here, that is 100 here. As we know very well, in the backward calculation we will use the divide technique. So we will divide by 25%. If loss is 25%, then we can say that is 0.75 or 75 divided by 100. So we can say 0.75. So we will divide by 0.75. So this decimal will be cancelled out and 100 will be there. So 25 3 times, 25 4 times, and it will be 100 into 4, 400 divided by 3, or we can say 1 3 3. So what was the cost price? 133 rupees, and there was a loss of 25 rupees. That's why you sell in selling price in 100 rupees. I hope you all are understand the basic concept of backward and forward calculation. मुझे लग रहा है कि आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन क्या होती है और फॉरवर्ड कैलकुलेशन क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा. तो देखिए, बैकवर्ड कैलकुलेशन में हमने क्या किया कि हमें कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं था लेकिन सेलिंग प्राइस पता था, तो हमने सेलिंग प्राइस के पता होने से हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया. लेकिन इससे पीछे जो हमने कैलकुलेशन की थी उसमें हमें कॉस्ट प्राइस पता था, और ये जो फॉरवर्ड का चिन्ह होता है ये ऐसा जाता है एरो कि कॉस्ट प्राइस पता है तो आप सेलिंग निकाल सकते हैं, तो आपको फॉरवर्ड जाना होगा, और एसपी पता है तो आप सीपी निकाल सकते हैं, आपको बैकवर्ड जाना होगा. तो ये तो बेसिक फंडा था कॉस्ट ये कैलकुलेशन करने का कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है. फाइन. So friends, here we will use a lot of calculation in this part. So right now our first part is this here for you. If CP is given to you, assume CP is 100 rupees. Fine. And profit is given in the percentage, that is 10% here, and you need to find out the value of selling price here. What will be the selling price? So friends, you know very well, if CP is given to you, then you can easily find out the value of SP in the forward calculation mode or in the backward calculation mode if anything is given, that means profit or loss. Okay, CP is given to you, profit is given to you, selling price you need to find out. So what will be the selling price? If you need to calculate the selling price, then you will approach for the backward calculation in this way. So we can say 100 into profit is 10%, that means 1.1 here. So selling price it will be 110 rupees. Okay, तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया है 100 रुपये और आपसे प्रॉफिट पूछा गया है, प्रॉफिट आपको दिया है 10%, और फिर आपसे क्या पूछा गया है? सेलिंग प्राइस. ओके, तो देखिए अगर सीपी दिया हुआ है तो आप एसपी निकालेंगे फॉरवर्ड कैलकुलेशन करके, 100 में 1.1 की मल्टीप्लाई कर दें, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. आपने यहाँ कोई फार्मूला यूज नहीं किया. सेकेंड क्वेश्चन इन द सेम वे, assume selling price is given to you, that is 140 rupees, and profit is given 20%. You need to find out the value of CP. Fine. If SP is given and you need to find out the CP, then you will use this backward calculation. Okay, so CP it will be 140 divided by, in the forward calculation we will use multiplication, and in the backward we will use division here. Fine. So 140 divided by 20%, that means 1.2.
because 20% is a profit, that means 120 divided by 100, so we can say 1.2. Okay, so if you will solve this one, then you will get approx 116, that is your cost price. Okay, so friends, in the same way, your third module, suppose CP is given to you, that is 100 rupees, and this time loss is given, loss that is 20%. Okay, and you need to find out the value of selling price. आपको selling price निकालना है, तो आप selling price कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया अभी कि CP से SP जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? इस वे में फॉरवर्ड, और SP से CP जाना है तो आप बैकवर्ड जाएंगे. सो सिंपल. लेकिन यहाँ पर लॉस दिया है, लॉस इज गिवन 20%. सो व्हाट इज द CP SP? SP it will be 100 into loss is 20%, that means 0.8. So it will be 80 rupees. That was your SP. Fine. If next is given to you, assume cost price is given. Cost price you need to find out. This time you need to evaluate the cost price, and loss is given 25%. Fantastic. And this time SP is given to you 100 rupees. Okay, so how you will calculate the CP here? So if SP is given and you need to find out the CP, then you will use the backward calculation. So 100 in the backward you will divide. If loss is 25%, then 25% it will be written as a 0.75. Why? Because 100 minus 25 it will be 75%, and 75 divided by 100 it will be 0.75. Okay, so it will be approx 133. So your cost price, that was the 133 rupees, and selling price, that was the 100 rupees, and ultimately you got a loss of 25%. आपका कॉस्ट प्राइस अगर 133 रुपए है और सेलिंग प्राइस आपने उसको कम में बेचा, 100 रुपए में बेचा, तो अब ऑब्वियसली आपको लॉस होगा. यहाँ से आपका क्रॉस चेक भी आपने कर लिया. फाइन. तो ये हमारा तरीका था कि हमें कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है. ओके, वन मोर कैलकुलेशन फॉर यू फ्रेंड्स. इफ सेलिंग प्राइस इज गिवन, that is 400 rupees. Fine. And discount is given this time. Discount is 10%. And you need to find the value of marked price. So you know very well, in our previous videos there, we have already told you, if MP is given, then you can find out the SP. If SP is given, then you can find out the MP here. Okay, so we will use this formula here. If SP is given to you, then you can find out the marked price. If marked price is given to you, then you can find out the SP. Okay, so SP is given 400 rupees. So how to find out the marked price, that is MP here. So it will be 400 divided by, discount is 10%, that means 0.9. It will be equal to 4000 divided by 9, and you will get 444.44 rupees. Fine. That means selling price, that was the 400 rupees, and you have given a discount, that is 10%, and your marked price, that was obviously 444. That means 444 rupees. तो देखिए, सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, तो आप वहां से मार्क्ड प्राइस निकाल सकते हैं, या आपको मार्क्ड प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो आप वहां से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. तो निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ से आप फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस, मतलब कि फॉरवर्ड कैलकुलेशन में, और आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मार्क्ड प्राइस. तो देखिए, यहाँ आपको एसपी दिया हुआ था और मार्क्ड प्राइस पूछा था और डिस्काउंट भी साथ में दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डिवाइड किया है, तो मतलब कि मैंने बैकवर्ड कैलकुलेशन को यूज़ किया है. और बैकवर्ड कैलकुलेशन में क्या हम यूज़ करेंगे, डिवाइड, और फॉरवर्ड में
मल्टीप्लिकेशन। तो इन क्वेश्चंस पे आप बहुत कमांड कर लीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस मैंने कराई है सारी की सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड आफ्टर ऑल वी विल डिस्कस द फर्स्ट पार्ट in the perspective of questions. It will be your part number 2 of profit and loss account. So in the part first we have discussed a lot of strategies how will follow. Okay, so friends, like this video and comment your doubts or anything. If you have any suggestions regarding this video, then please do comment and kindly share this video among your friends. And friends, if you are a new user, then do subscribe. Okay, have a nice day. Thank you.